Good afternoon, everyone. Welcome to Vanik Smart Classes. आज आमर जो ओडिशा पुलिस आरआई अमिनो एग्जाम्स रो जो क्वेश्चंस डिस्कशन सीरीज चलची आज तार गोटे नेक्स्ट क्लास आज ओके ज्योग्राफी गोटे जानि गोटे बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक आउ मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस ज्योग्राफी पार्ट रो आसे आउ एबे तमर जो रिवाइज्ड पैटर्न अछि ओके तो सही तरह कोन जेतु कंपटीशन बढ़ी जाई छै तो टिके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को से बेसी फोकस करूची ओके कोन करूची कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को से बेसी फोकस करूची ओके देखो फैक्चुअल क्वेश्चंस नो डाउट सब बेले डोमिनेंसी रहिबो तार बुझि परलो किंतु जो कोन अछि हमर जो एनालिटिक क्वेश्चन अछि और जो हमर जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन अछि तार भी इंपोर्टेंस हेई गलानी ओके तो आमे आज किछिटा क्वेश्चंस देखिबा तार रिलेटेड टॉपिक्स और तार जहाँ सब इंपोर्टेंट थ्योरेटिक पार्टा ताकू भी आमे डिस्कस करियो ठीक अछि फर्स्ट क्वेश्चन को देखो सिस्टमैटिक ओके ओके देखो कांसेप्ट हला फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया ओके फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया क्लियर एटा हला हमर कांसेप्ट जे कोन फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया लेट्स सपोज आमे तो जानि छे दैट कोन फिजियोग्राफिक डिवीजन ओके मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स देखि थिबो ओके फिजियोग्राफिक डिविजन्स रो डोमिनेंसी थाए ज्योग्राफी क्वेश्चंस रे हिमालयस पेनिनसुलर प्लेट्यू इंडो गैंगेटिक प्लेन्स कोस्टल प्लेन्स बुझि परलो एई सब जो टॉपिक्स अछि यार डोमिनेंसी रुहे ओके तो हमर जो फर्स्ट से पचारची व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ इंडिया इज द यंगेस्ट इन जियोलॉजिकल टर्म्स ओके जेति की हमर कोन फिजियोग्राफिक डिविजन्स अछंती फिजियोग्राफिक डिविजन्स अछंती तांको भितर सबटु यंगेस्ट के ये क्वेश्चन पचारची ओके हमर 6टा फिजियोग्राफिक डिवीजन कोन फर्स्ट हला हिमालयस एंड हमर जो पूर्वांचल हिल्स क्लियर इटा हमर फर्स्ट फिजियोग्राफिक डिवीजन सेकंड रे कोन आसे नॉर्दर्न प्लेन्स ओके सेकंड रे कोन आसीबो नॉर्दर्न प्लेन्स और कोन कहवा जाय ताकू इंडो गैंगेटिक प्लेन्स भी कहवा जाय ओके ये हमर कोन दिस इज द सेकंड फिजियोग्राफिक डिवीजन नॉर्थ रे कोन अछि हिमालयस अछि तापर कोन अछि इंडो गैंगेटिक प्लेन्स अछि ओके थर्ड रे कोन आसे हमरो पेनिनसुलर प्लेट्यू ओके फोर्थ रे आसीबो थॉर डेजर्ट ओके फोर्थ रे कोन आसे थार डेजर्ट फिफ्थ रे आसीबो कोस्टल प्लेन्स ओके सिक्स्थ रे आसीबो हमरो आइलैंड्स ओके एटा कोन एटा हमरो 6टा फिजियोग्राफी डिवीजन इंडिया रो क्लियर
से कहूची यांको भितर सबुठु यंगेस्ट फिजियोग्राफी डिवीजन की ओके सबुठु यंगेस्ट ओके सबुठु यंगेस्ट हला देखो मोस्ट ऑफ दी जदि पिला माने एग्जाम जो क्वेश्चन करथबे से माने कोन करथबे हिमालयस सौम्यश्री लंका से कहउचंती हिमालयस ओके देखो हां एई जिंस डाउट ना समस्त को थाए जे हिमालयस आर दी यंगेस्ट नुह हां हिमालयस आर दी कोन यंगेस्ट माउंटेन्स ओके हिमालयस कोन यंगेस्ट माउंटेन्स ओके बट यंगेस्ट फिजियोग्राफिक डिवीजन के हिमालयस नुह अंडरस्टूड यंगेस्ट फिजियोग्राफी डिवीजन हला हमरो इंडो गैंगेटिक प्लेन्स बुझी पाल कथा हाँ मु बुझौची गोटे मिनिट ये देखो जिते बेले कौन हला हमर जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट आउ यूरेशियन प्लेट कोलाइड कले कौन कले इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट आउ यूरेशियन प्लेट ओके क्वेश्चन से एटा भी आसी पारे को दीटा प्लेट रो कोलिजन रे हिमालयस रो फॉर्मेशन हिची ओके ओके तो यूरेशियन प्लेट आउ इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट कोलाइड कले बुझी पाल कथा यार कोलिजन को हला हिमालय फॉर्मेशन हला हिमालयस फॉर्मेशन हला ओके हिमालयस गोटे हाइट नेला बुझी पाल कथा हिमालयस हाइट नेला परे ऊपर को हला ग्लेशियर्स हेले ओके जोठु हमर कोन गंगोत्री ग्लेशियर्स जोठु गंगार ओरिजिन गोमुख बुझी पाल तापरे यमुनोत्री ग्लेशियर बुझी पाल जोठु यमुनार ओरिजिन हिची बुझी पाल कथा तो से ग्लेशियर थ्रू रिवर रो फॉर्मेशन हला आउ से रिवर को हले डिपोजिशन कले कोन कले सेडिमेंट्स डिपोजिशन कले आउ से सेडिमेंट रो डिपोजिशन रे को हला नॉर्दर्न प्लेन्स रो फॉर्मेशन हला बुझी पाल कथा ता माने कोन हिमालयस परे कोन फॉर्मेशन हिची इंडो गैंगेटिक प्लेन्स रो फॉर्मेशन हिची तो ये कोन यंगेस्ट फिजियोग्राफिक डिवीजन एबे डाउट क्लियर हला जानि पालो काहे की यंगेस्ट नुह हिमालयस हाँ सबुठु यंगेस्ट माउंटेन्स हला हिमालयस बट यंगेस्ट फिजियोग्राफी डिवीजन हिमालयस नुह सबुठु यंगेस्ट फिजियोग्राफी डिवीजन हला इंडो गैंगेटिक प्लेन्स क्लियर ओके एटा थिला हमर कोन फिजियोग्राफिक डिवीजन पार्ट रो क्वेश्चंस ओके वेरी गुड ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिबा ओके नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो एठी आउ गुटे जो हमर जो प्लेट्यू रीजन अछि मालवा प्लेट्यू ता विषय रे पचारछि मालवा प्लेट्यू इज कंसीडर्ड ए ट्रांजिशनल जोन because it lies between मालवा प्लेट्यू को दीटा रीजन रो ट्रांजिशन जोन हिसाब रे देखा जाय ताकू ओके लाइज बिटवीन व्हिच टू रीजन देखो फर्स्ट कोन देछि देखो द हिमालयस एंड द इंडो गैंगेटिक प्लेन्स फर्स्ट ऑप्शन देखो तापरे डेक्कन प्लेट्यू एंड द इंडो गैंगेटिक प्लेन्स ओके अरावलीज एंड द सतपुरा रेंजेस वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट कोठी अच्छी कोठी मालवा प्लेट्यू अच्छी कोठी देखो लेट सपोज बुझी पारल एटा हमर इंडिया रो मैप एठी फर्स्ट आसी जो हमरो मेवाड़ आउ मारवाड़ प्लेट्यू बुझी पारल ए रीजन टा हला मालवा प्लेट्यू तापरे बुंदेलखंड तापरे बाघेलखंड तापरे छोटा नागपुर प्लेट्यू बुझी पारल तापरे दंडकारण्य प्लेट्यू ओके एटा हला महाराष्ट्र प्लेट्यू तापरे आसीबो कन्नड़ प्लेट्यू ओके एठी गोटे छोटो इंपोर्टेंट प्लेट्यू अछि रांची प्लेट्यू ओके एगुडा कोन सब प्लेट्यू रीजन्स हमरो बुझी पाल कथा ओके देखि दियो ओके एटा हला
मेवाड़ प्लेट्यू क्लियर एटा मारवाड़ प्लेट्यू ओके एटा मालवा प्लेट्यू तापरे एटा बुंदेलखंड ठीक अच्छे तापरे एटा आसथियो बाघेलखंड ओके एटा हमर छोटा नागपुर प्लेट्यू ठीक अच्छे एटा हमर दंडकारण्य प्लेट्यू ओके महाराष्ट्र प्लेट्यू ओके कन्नड़ प्लेट्यू क्लियर ये जो छोटो पार्टा देखुच ओके दिस इज द रांची प्लेट्यू एटा गोटे माइनर प्लेट्यू ओके ओके यही भितर आ गोटे अच्छी तेलंगाना प्लेट्यू भी अच्छी ओके एबे जेतेबेले तुम लोकेशन जानिलो आंसर सेकंड क्वेश्चन रो आंसर Malwa Plateau lies between which two regions? एटा हमर कोन प्लेटू मानकर रीजन्स ओके देखिलो एबे बताओ एबे आंसर करो ओके लोकेशन जान लो ना मालवा प्लेटू को रीजन देखो एबे तमे तार आंसर करि परियो लोकेशन जाना पड़ी गला सब इंपोर्टेंट प्लेटू रीजन्स रो ओके एबे आंसर करो इट इज द ट्रांजिशन जोन बिटवीन व्हिच टू रीजन्स देखो मालवा प्लेट्यू ओके एटा मालवा प्लेट्यू क्लियर ओके क्या भितर अच्छे से देखो एटा हला हमर इंडो गैंगेटिक प्लेन्स ओके आउ ता तले कोन अछि डेक्कन प्लेट्यू बुझि पालो कथा तो इट इज द ट्रांजिशन जोन बिटवीन सौम्याश्री ए कहिलो तमे देखो हिमालयस एंड द इंडो गैंगेटिक प्लेन्स हिमालयस ऊपर रही गले ओके इंडो गैंगेटिक प्लेन्स तार रिसेंट नॉर्थ रे रिसेंट साउथ रे अछि ओके आंसर कोन होबो देखो एटा हला इंडो गैंगेटिक प्लेन्स एटा हला डेक्कन प्लेट्यू ता मझिरे कोन अछि मालवा प्लेट्यू तो से ट्रांजिशन जोन बिटवीन व्हिच टू रीजन्स इंडो गैंगेटिक प्लेन्स एंड दी व्हाट डेक्कन प्लेट्यू बुझि पालो कथा आंसर वेरी गुड श्रिया वेरी गुड ओके आंसर कोन होबो यार बी ओके डेक्कन प्लेट्यू आउ इंडो गैंगेटिक प्लेन्स ताको भितरे कोन अछि मालवा अछि मालवा प्लेट्यू ओके एंड इट इज दी ट्रांजिशनल जोन ये कोन ट्रांजिशनल जोन क्लियर ओके सौम्याश्री वेरी गुड नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो से कहि छी which among the following is the correct descending order of elevation माने highest to lowest कौन बताई छी highest to lowest एगुड़ा कौन
माउंटेन रेंजेस कौन माउंटेन रेंजेस सेटा भी जानी जियो जेतबेले हिमालयस आमे देखू ओके लेट्स सपोज ओके इटा हमरो नॉर्दर्न पार्टटा क्लियर ओके एटा हला हमरो ग्रेटर हिमालयस बुझी पालो कथा एटा कोन हमरो ग्रेटर हिमालयस ओके क्या तले आसी जाए कौन लेसर हिमालयस और हिमाचल ओके ग्रेटर हिमालयस को आउ कौन कहती हिमाद्री ओके हिमाचल हिमाचल को आउ कौन कहती लेसर हिमालयस कहती ओके तापर आसी जाए शिवलिक ओके शिवलिक को कौन कहा जाए आउटर हिमालयस बुझिपाल कथा किंतु तांको ऊपर कौन अछंती ट्रांस हिमालयस अछंती बुझिपाल माउंटेन रेंजेस जो माने कौन अछंती हिमालयस रो भी नॉर्थ रे अछंती तांको कौन कहा जाए ट्रांस हिमालयस कहा जाए ओके एठी लिखा है जो ऑप्शन से जो काराकोरम ओके एटा कौन ट्रांस हिमालयस केमिति देखो काराकोरम लद्दाख झांस्कर आउ कैलाश रेंजेस बुझी पालो एई चारिटा रेंजेस कौन काराकोरम रेंजेस लद्दाख रेंजेस आउ झांस्कर रेंजेस और कैलाश रेंजेस एमानु को कहा जाए ट्रांस हिमालयस कहा जाए को कहा जाए यहाँ को ट्रांस हिमालय ओके काराकोरम ओके लद्दाख क्लियर झांस्कर आउ कैलाश से पचारि देखो डिसेंडिंग ऑर्डर माने हाईएस्ट टू लोएस्ट तो हाईएस्ट कोटा हबो माउंट एवरेस्ट कोठी अछि माउंट एवरेस्ट कोठी अछि आंसर प्रिया कहिसंती आंसर सी हिमाद्री काराकोरम हिमाचल आउ किए जानकी से कहउचंती सी हिमाद्री काराकोरम आउ हिमाचल आउ की आंसर करो द काराकोरम रेंजेस ठीक अछि बट हिमाद्री और हिमाचल कौथरे अछन से माने हिमालयस रो पार्ट बट काराकोरम हिमालयस रो पार्ट नुह ओके सेटा जानी के आंसर करो आंसर कौन हम यार आंसर हम डी ओके हिमाद्री माने ग्रेटर हिमालयस ओके हिमाचल माने लेसर हिमालयस ओके शिवलिक माने आउटर हिमालय ओके काराकोरम को पूरा आमर जो ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन अच्छे हिमालयस रो बाहर रखा जाए बुझी पाल कथा माउंट एवरेस्ट नेपाल हाँ माउंट एवरेस्ट ओके नेपाल रे अछि ओके केते तार 8848 मीटर्स एप्रोक्स बुझी पाल कथा
इंडिया रो हाईएस्ट पिक कोटा कांचनजंगा ओके कोठी अछि सिक्किम आउ नेपाल रो बॉर्डर रे ओके हाइट केते तारो 8598 मीटर्स एप्रोक्स बुझि पालो कथा देखो जदि आमे पीओके को भी ऐड करबा जदि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को भी जदि ऐड करबा बुझि पालो कथा ताहाले कोन हबो ओके K2 ओके K2 कोन गॉडविन ऑस्टिन ओके ये हमर हाईएस्ट पिक हबो ओके यार हाइट केते 8611 मीटर्स बुझि पालो कथा जदि सोवरेन इंडिया को देखिया बट से कोन हिची पीओ के रीजन ता कोठी अछि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से डिस्प्यूटेड रीजन रे अछि बुझि पालो सेत पई K2 कोन करा जाय K2 कहार पार्ट K2 काराकोरम रो पार्ट बुझि पालो कथा K2 कहार पार्ट काराकोरम रेंजेस रो पार्ट बुझि पालो ताकू आउट ऑफ क्लासिफिकेशन रखा जाय बुझि पालो कांचनजंगा को सेत पई कोन करा जाय इंडिया रो हाईएस्ट पिक को ओके कोठी अछि सिक्किम नेखा नेपाल रो बॉर्डर रे अछि ओके वेरी गुड नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो which of the following is a depositional feature कौन कहूची से depositional feature of the Himalayan river okay feature दी प्रकार था geographical features geographical features okay गोटे हला erosional ओके आउ गोटे कोन डिपोजिशनल ओके ये पचारुची डिपोजिशनल फीचर्स ओके दैट कंट्रीब्यूट्स सिग्निफिकेंटली टू द इंडो-गैंगेटिक प्लेन्स रो सिग्निफिकेंट रीजन को रीजन को ऑप्शन हला भंगार खादर तेराई आउ रे कौन हम आंसर आंसर कौन हम 4 रो प्रिया कहउचंती ए और जानकी कहले बी और सौम्याश्री कहउचंती ए न्यू एलोवियम कोडा मो पचारू जे न्यू एलोवियम मते बताओ न्यू एलोवियन कोडा ओके जेमिति कि हमर कोन थाए यदि हमें क्लासिफिकेशन प्लेन्स रो क्लासिफिकेशन देखिबा कोन हुए फर्स्ट आसी जीवो भाबर ओके तापर आसी जीवो तराई ओके तापर आसी जीवो भंगार ओके तापर आसी जीवो खादर बुझ पालो कथा एटा हला कोन नॉर्दर्न प्लेन्स रो एसिमिलेशन बुझ पालो कथा एटा कोन नॉर्दर्न प्लेन्स रो क्लासिफिकेशन मते बताओ व्हिच इज द न्यू एलोवियम सौम्याश्री कहले खादर वेरी गुड
खादर इज द न्यू एलुवियम माने सबुठ अधिक प्रोडक्शन को रीजन रे हुए खादर रीजन रे हुए वेरी गुड खादर रीजन न्यू एलुवियम वेरी गुड ओके तो से कौन कहूची व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिपोजिशनल फीचर एई सब कोन याकू छाड़ी दे कि बाकी सब कोन डिपोजिशनल फीचर ओके तराई भी कोन सेही रीजन रे कोन वाटर आसे जो रिवर एटी कोन होंती भाबर रीजन रे सब डिसअपियर हो जाते रिवर ओके कैलक्रियस स्टोनी रीजन एटी कोन डिसअपियर हो जिवे एटी पुनी रीओरिजिनेट हेबे बुझि पालो कथा तो एटी वाटर अछि तो ए रीजन रे कोन अछि वेजिटेशन अछि ए रीजन रे कोन अछि वेजिटेशन अछि बुझि पालो किंतु सबुठु दीटा इंपोर्टेंट डिपोजिशनल रीजन कोडा भंगार और खादर ए दीटा कोन सबुठु इंपोर्टेंट दीटा कोन डिपोजिशनल फीचर फ्लूवियल एक्शन ऑफ रिवर्स जोटा कोहा हेतला कोन फ्लूवियल एक्शन ऑफ रिवर्स बुझिबाला कथा कोन फ्लूवियल एक्शन ऑफ रिवर ओके तो आंसर कोन हबो एठी जेहेतु न्यू एलुवियम ओके सिग्निफिकेंटली टू द इंडो गैंगेटिक प्लेन्स फर्टिलिटी ये सबुठ अधिक फर्टाइल खादर ना भंगार खादर सबुठ अधिक फर्टाइल बिकॉज न्यू एलुवियल रीजन बुझि पालो तो आंसर कोन हबो एठी खादर बुझि पालो लॉजिक ओके सब बेले लॉजिक को यूज करो से कहूची मोस्ट फर्टाइल सिग्निफिकेंटली देखो के कंट्रीब्यूट करूचे सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूटिंग टू द इंडो गैंगेटिक प्लेन्स फर्टिलिटी पचार से तो किए अधिक फर्टाइल हबो जे न्यू डिपोजिशन हेज बुझि पालो कथा जो न्यू डिपोजिशन हेची से हला बुझि पालो सबुठ अधिक फर्टाइल क्लियर ओके ओके वेरी गुड नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा बुझि पालो आमे देखो फर्स्ट फिजियोग्राफी डिवीजन पढ़ी देले प्लेटू भी कवर कर देले नॉर्दर्न प्लेन्स कवर हे गला बुझि पालो कथा सीरीज बाय सीरीज आमे कोन करबा टॉपिक्स कवर करके चलीबा गोटे क्वेश्चन गोटे टॉपिक जीवो बुझि पालो कथा एमिति हरी रे रहइबोनी कि खाली टिक करके पळेया बिकॉज़ तमर पैटर्न ऑलरेडी चेंज हे सलानी एबे खाली एमिति नुह कि खाली फैक्चुअल क्वेश्चन पचारुची एनालिटिक क्वेश्चन भी पचारुची थियोरेटिक क्वेश्चन पचारुची बुझि पालो कथा तो जति कि हे परिबा फिनोमिनल क्लैरिफिकेशन रखो क्वेश्चन 3 अंडरस्टूड बुझि पालो कथा ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो द वेस्टर्न घाट्स आर कंपैरेटिवली हायर देन द ईस्टर्न घाट्स काहे की रीजन कौन होता से पचारिचे रीजन व्हाट इज द रीजन they are formed by the faulting while the eastern ghats are denuded first option they are nearer to the Deccan Trap volcanic region second option they are older than the eastern ghats third option they receive more rainfall leading to erosion control कौन हबो यार आंसर फिफ्थ क्वेश्चन आंसर करो फिफ्थ क्वेश्चन आंसर Western Ghats are comparatively higher than the Eastern Ghats काहे की सर B they are nearer to the Deccan Trap volcanic region थिला but that is already gone volcanic region थिला but से volcanic रो जो origin आउ नहीं existence आउ नहीं सेठी
ओके ग्लोरिया एटा तो नुह एटा हे परिबने ना ओल्डर हेले थोड़ी हाइट बढ़े ओल्डर हेले इरोजन अधिक होची ना Somyasri 5C not sure D they receive more rainfall and to erosion control एटा नुह ना जति की अधिक रेनफॉल हबो ओके more rainfall leads to more leaching okay more rainfall leads to more leaching erosion control नु एई ऑप्शन को डिस्कार्ड करो ओके they are older than the eastern ghat नुह वेस्टर्न घाट्स ओल्डर नुह ईस्टर्न घाट्स ओल्डर तो एटा को भी डिस्कार्ड करो ओके थर्ड को देखो दे आर नियरर टू द डेक्कन ट्रैप वोल्केनिक रीजन ठीक अछि बट से वोल्केनिक जो एक्जिस्टेंस थिला से एक्जिस्टेंस आउ बिल्कुल नहीं तो एटा भी हबो नहीं आंसर को हबो तारो दे आर फॉर्म्ड बाय फॉल्टिंग दे आर कोन फॉर्म्ड बाय फॉल्टिंग and eastern ghats are denuded yes eastern ghats are denuded बुझिबालो कथा माने कोन देखो ओके क्लियर एटा वेस्टर्न घाट्स ओके एटा ईस्टर्न घाट्स बुझी पारलो गोटे जिंस मार्क करो तो जो मेजर रिवर्स जंती महानदी ओके गोदावरी ओके कृष्णा कावेरी ए सब कोन करूचंती ईस्टर्न घाट्स को इरोड करके जाई कि कोन करूचंती बे ऑफ बंगाल रे ड्रेन होचंती अंडरस्टूड बुझी पारलो कथा माने कोन करूचंती ईस्टर्न घाट्स को इरोड करके गॉर्जियस फॉर्म करूचंती ओके आ इरोड करके जाई कोठी ड्रेन होचंती बे ऑफ बंगाल ड्रेन होचंती बुझी पालो सेट पई एटी लिखा है दैट ईस्टर्न घाट्स आर डेन्यूडेड डेन्यूडेशन होची सेट ओके हमर जो सात कोसिया गॉर्ज अछि से गॉर्ज ऑफ फॉर्मेशन केमिति हिची बिकॉज़ महानदी रिवर कोन करिछि सेई जो हिल्स को कोन करिछि इरोड करिकि सेठी गॉर्जियस रो फॉर्मेशन करिछि अंडरस्टूड तो एटा कोन हला ए दे आर फॉर्म्ड बाय फॉल्टिंग माने वेस्टर्न घाट्स केमिति फॉर्मेशन हेछि फॉल्टिंग रो फॉर्मेशन हेछि ओके आ ईस्टर्न घाट्स कोन दे आर डेन्यूडेड यस दे आर डेन्यूडेड बाय द रिवर्स द ईस्ट फ्लोइंग रिवर जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स छथि से माने कोन होछन कोन करूछन ताको डेन्यूडेशन करूछन एठी ओके क्लियर एटा ये आउट टॉपिक इंपोर्टेंट बुझी वाला कथा कोन ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स क्लियर फर्स्ट जेमिति हम फिजियोग्राफी डिवीजन पढिले सेकंड रे प्लेटू पढिले थर्ड रे प्लेन्स पढिले फोर्थ रे ओके फिफ्थ रे ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स देखिले बुझी वाला कथा ठीक है इंपोर्टेंट जिंस देखि देबा ओके हमर जो ईस्टर्न घाट्स रो हाईएस्ट पीक कोडा आ वेस्टर्न घाट्स रो हाईएस्ट पीक कोडा एटा भी चेन ऑफ माउंटेन रेंजेस ना चेन ऑफ हिल्स बुझी वाला कथा तो हमर जो ईस्टर्न घाट्स है तारो हाईएस्ट पीक हला जिंदागढ़ बुझी पालो 1690 मीटर्स ओके बहुत गुडे बुक्स रे अपडेट हेनी स्टिल महेंद्रगिरी देखौची बट महेंद्रगिरी ठो भी आहुरी हाइट रे कोन अछि देवमाली हाइट रे अछि अराउंड 1680 मीटर्स ओके ता ऊपर अछि आर्माकोंडा रो हाइट हला 1685 मीटर्स ओके आ जिंदागढ़ जो अछि एटा लेटेस्ट ईयर अछि एंड इट इज 1690 मीटर्स ओके ईस्टर्न घाट्स रो हाईएस्ट पीक वेस्टर्न घाट्स रो हाईएस्ट पीक कोटा अनाईमुडी ओके
2695 मीटर सेटा माने कोन वेस्टर्न घाट्स हाइट रे अछि ईस्टर्न घाट्स कम हाइट रे अछि बुझि पाल कथा नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा एठी आउ गोटे जिंस पचारिछि देखो पुणी से पचारिछि लद्दाख प्लेट्यू ओके लद्दाख प्लेट्यू इज सिचुएटेड बिटवीन व्हिच टू माउंटेन रेंजेस ओके से पचारुछि लद्दाख प्लेट्यू इज सिचुएटेड बिटवीन व्हिच टू माउंटेन रेंजेस फर्स्ट जेतले फिजियोग्राफिक डिविजन्स रो मु बतैथिली तापरे हिमालयस रो केमिति ट्रांस हिमालयस रो पार्ट बतैथिली सेइथरे जो ड्राइंग टा करथिली सेइथरे जो मैप टा बनैथिली ताको टिके विजुअलाइज करो जानि परिबो कोन तीनटा इंपोर्टेंट ग्लोरिया ए वेरी गुड सोम्याश्री ए वेरी गुड हाँ बस सेही ट्रांस रीजन को मने पकेबो ओके काराकोरम लद्दाख झांस्कर वेरी गुड बुझि पारलो आ गोटे कोन इंपोर्टेंट अछि कैलाश ओके काराकोरम लद्दाख झांस्कर और कैलाश एटा कोन ट्रांस हिमालयस रीजन्स क्लियर डन ए वेरी गुड ए नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा Which one of the following rivers marks the southern boundary of the Chota Nagpur Plateau? कौन पचारची southern boundary of the Chota Nagpur Plateau. Chota Nagpur Plateau कोठी अछि विजुअलाइज करो मैप रे बनैथिली मु प्लेटू ओके प्लेटू southern boundary कौन बतैली ईस्टर्न घाट्स रो मु एक्सटेंशन केते बतैली मते कहलो ईस्टर्न घाट्स रो एक्सटेंशन केते रु केते मु लास्ट जो हमरो क्लास हेतला मु सेथरे बतैथिली ना कि हमर जो ओडिसा रो नॉर्दर्न पार्ट टा छोटा नागपुर रीजन रो इन्फ्लुएंस रे आसे सेहित पे कोन केउझर जाजपुर और सुंदरगढ़ रीजन मिनरल डिपॉजिट रीजन छोटा नागपुर प्लेट्यू कोन वन ऑफ द हाईएस्ट मिनरल डिपॉजिट रीजन इन दी कंट्री बुझि पालो कथा एबे को आंसर सदर्न बाउंड्री सेही रीजन कथा मु कहूनी मु कहूची सदर्न बाउंड्री लेट्स सपोज ईस्टर्न घाट्स को ऊपर देखि जाओ ओके ईस्टर्न घाट्स रो एक्सटेंशन केते केते ओके वैगई रिवर कोठी अछि तमिलनाडु रे ओके आउ तार जो नॉर्दर्न एक्सटेंशन कोन महानदी रिवर ओडिशा रीजन रे बुझि पारलो एटा ईस्टर्न घाट्स रो कोन एक्सटेंशन एबे कुह प्लेटू रो सदर्न बाउंड्री कोटा महानदी टू वैगई ओके ए यार आंसर कोन हबो याकू देखो मार्क करो आ कुह यार आंसर कोन हबो सदर्न बाउंड्री ऑफ द छोटा नागपुर प्लेट्यू फर्स्ट स्लाइड रे मु बतैथिली ना प्लेटू रो हमरो मैप टा बनैथिली सब इंपोर्टेंट प्लेट्यूज हमरो जहा थिले इंडिया रे मेजर और माइनर प्लेट्यूज
ओके यार आंसर हबो महानदी ओके ये कौन करे पूरा सदर्न बाउंड्री ऑफ कौन छोटा नागपुर प्लेट्यू को से डिफाइन करे बुझी पाल कौन सदर्न बाउंड्री ऑफ दी छोटा नागपुर प्लेट्यू ओके ता तल को कौन हो जाए ईस्टर्न घाट रही जाए ता ऊपर को कौन छोटा नागपुर प्लेट्यू बुझी पाल तार किछिटा ट्रांजिशन रीजन भी रहिबो बट मोस्टली कौन महानदी ऊपर तल को कौन रही जाए ईस्टर्न घाट्स और महानदी ऊपर को कौन रही जीवो वेस्टर्न घाट सॉरी हमर जो छोटा नागपुर प्लेट्यू बुझी पाल क्लियर हला ओके आंसर कौन यार महानदी रिवर ओके महानदी रिवर है तार आंसर माने महानदी रिवर मार्क्स दी सदर्न बाउंड्री ऑफ दी छोटा नागपुर प्लेट्यू ता तल को महानदी रिवर तल को कौन हो ईस्टर्न घाट रही बुझी पाल एटा ओके महानदी रिवर तल को कौन ईस्टर्न घाट्स ता ऊपर को छोटा नागपुर प्लेट्यू ओके सौम्याश्री वेरी गुड ग्लोरिया से गोदावरी नुह करेक्ट करो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो से पचारुची पूर्वांचल हिल्स डिफर फ्रॉम द हिमालयस इन व्हिच एस्पेक्ट पूर्वांचल हिल्स आमे जतले आमे कोन पढू जतले फिजियोग्राफी डिवीजन रो जो पढू सेइथरे दीटा एस्पेक्ट अछि फर्स्ट फिजियोग्राफी डिवीजन रो ओके हिमालयस ओके एंड दी पूर्वांचल हिल्स क्लियर माने नॉर्दर्न माउंटेन्स एंड दी नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स क्लियर नॉर्दर्न माउंटेन्स एंड दी नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स ये दी जण कोन गोटे ही फिजियोग्राफी डिवीजन रो पार्ट एटा कोन नॉर्दर्न हिमालय ओके पूर्वांचल हिल्स आर दी एक्सटेंशन ऑफ दी नॉर्दर्न हिमालय एबे कुह पूर्वांचल हिल्स डिफर फ्रॉम हिमालयस इन व्हिच एस्पेक्ट केमिति से हिमालयस टू अलग मेड ऑफ फोल्डेड सेडिमेंटरी रॉक्स बी कहूछ आंसर बी हबोनी आंसर हिमालयस भी सेडिमेंटरी रॉक्स फॉर्मेशन टेथिस सी रो जो सेडिमेंट थिला से कोठी जमा हला जे कि प्लास्टर्ड हे गला ना हिमालयस रो टॉप रे ओके कौन हबो आंसर आंसर हबो डी runs mostly from north south direction okay himalayas emiti west to east अछि himalayas west to east but purvanchal hills केमिति अछंती north to south अछंती mostly runs from north to south direction correct करो geologically older भी नुह okay runs mostly in a north to south direction यार आंसर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा देखो एटी पचाई डून्स व्हाट डू यू मीन बाय डून्स डून्स रो माने कोन हिमालयस रे ओके देखो किछि इंपोर्टेंट कांसेप्ट अछि जेमिति कि दोआब
ओके dunes, ओके dwarf, एटा किछटा इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट ओके जोड़ा हमर फिजियोग्राफिक डिविजन्स रे अछि ओके आहुरी भी अछि जेमते कि कायाल्स आमे कायाल्स तो क्लासेस रे डिस्कस करी छे क्रिया कहउचंती बी longitudinal valleys between lesser Himalayas and Sivaliks. Very good. B. Very good. Longitudinal valleys between lesser Himalayas and Sivaliks. Very good. Priya. Okay. Dunes माने कोन जेमति कोआ गला longitudinal valleys between lesser Himalayas and Shivalik. Okay. एटा कोन western Himalayas कथा कोआ जाउछि बुझि पालो एटा कोन western Himalayas कथा कोआ जाउछि क्लियर जदि ईस्टर्न हिमालयस को कहा जिवो ताहाले कोन होई जिवो सेही जिंस द्वार से जिवो बुझि पाला कथा ईस्टर्न हिमालयस रे जो ओके ईस्टर्न हिमालयस रे कोन अछंती जो लॉन्गिट्यूडिनल वैलीज अछंती ताकू कोन कहा जाय द्वार्स आ वेस्टर्न हिमालयस रे जो लॉन्गिट्यूडिनल वैलीज अछंती ताकू कोन कहा जाय डून्स कहा जाय दोआब कोन दोआब हला ओके द फर्टाइल region between two rivers बुझि पालो द फर्टाइल रीजन बिटवीन टू रिवर्स दीटा रिवर मझी रे जो फर्टाइल लैंड था केमिति दी जण जाक कोन करिवे ताकर सेडिमेंट्स डिपोजिशन करिवे बुझि पालो कथा तो सेही जो फर्टाइल लैंड को कोन कहा जाय दोआब कहा जाय क्लियर बहुत ही फर्टाइल लैंड अंडरस्टूड नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा which physiographic unit of India is the most prone to seismic activity which physiographic unit or division okay of India is most prone to seismic activity माने earthquake prone region को रीजन टा हला सबुठु अधिक earthquake prone region देखो आंसर करो को रीजन टा सबुठु अधिक earthquake prone region फर्स्ट ऑप्शन देखो पेनिनसुलर प्लेट्यू सेकंड हला इंडो गैंगेटिक प्लेन्स थर्ड हला हिमालयन बेल्ट डी हला कोस्टल प्लेन्स सौम्याश्री आंसर सी हिमालयन बेल्ट बस हिमालयन बेल्ट हला तार आंसर काहे की ओके पूरा मेडिटेरेनियन रीजन रु ओके जो ईस्टर्न मोबाइल बेल्ट आसे ओके कोठो आसे मेडिटेरेनियन रीजन रु बुझ पालो हिमालयस पाखको ओके इट इज ए earthquake belt it is a mobile earthquake belt बुझ पाला कथा तो एटा कोन सबटु earthquake prone region क्लियर पेनिनसुलर प्लेट्यू कोन से इट इज अ स्टेबल रीजन पेनिनसुलर प्लेट्यू रीजन कोन ये गोटे स्टेबल रीजन यार आंसर कोन हबो हिमालयन बेल्ट हबो क्लियर
ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिया देखो ये टिके लेंथी क्वेश्चन अच्छी ओके बट पूरा कंप्लीट हमर जो रॉक सिस्टम अच्छी ताकू से तार डाउट सब क्लियर हो जो कौन हम यार आंसर आग ऑप्शन को देखिबा आउ फर्स्ट से कहिछि हिमालयन माउंटेन सिस्टम विषय पचारछि का विषय पचारछि हिमालयन माउंटेन सिस्टम विषय क्लियर ओके तो जो हिमालयन माउंटेन सिस्टम अच्छी ओके तो से कौन अच्छी फर्स्ट क्वेश्चन को देखो फर्स्ट ऑप्शन को देखो दी ग्रेटर हिमालय को कौन कहा जाए हिमाद्री कहा जाए consist of crystalline rocks and are perennially snow cover yes माने स्नो कवर थांती नेक्स्ट लेसर हिमालयस और हिमाचल include major hill station and valleys like Kashmir and Kangra okay कश्मीर रीजन रो जो कोन अछि हिल स्टेशन अछि और कांगरा रीजन रो जो हिल स्टेशन अछि लेसर हिमालयस रे अछंती ओके ओके थर्ड को देखो the outer Himalayas or shivaliks are mainly composed of unconsolidated sediments and content dune formations एटा हमें जस्ट पढ़िले dune formations या previous question में पढ़िले फोर्थ ऑप्शन को होची the trans Himalayas includes ranges like Karakoram and Ladakh which are older than the greater Himalayas okay आंसर कौन होबे यार अटेम्प्ट कर ताकू सौम्याश्री कहउचंती ऑल ऑफ द अबव फर्स्ट तो एटा तो जना पड़ी जाउची ना कि हां माने इट इज द राइट स्टेटमेंट थर्ड टा भी जना पड़ी जाउची राइट स्टेटमेंट बोली ओके तो जदि कॉम्बिनेशन देखिबो लेसर हिमालयस इंक्लूड मेजर हिल स्टेशंस एटा भी ओके अछि कश्मीर रीजन जो हिल स्टेशन अछि कांगड़ा हिमाचल रीजन जो हिल स्टेशन अछि ओके फोर्थ फोर्थ ऑप्शन को देखो फोर्थ स्टेटमेंट को the trans Himalayas includes ranges like Karakoram and Ladakh which are older than greater Himalayas is it okay so मैं आसरे ठीक आंसर एटा all of the above clear older than Karakoram and Ladakh are older than the greater Himalayas okay next question को जीवा देखो प्लेन्स रीजन विषय पचार आम सब फिजियोग्राफी डिवीजन पढ़ला क्लासिफिकेशन ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स पढ़ला एबे रीजनल क्लासिफिकेशन को पळे आसिले आमे ओके कौन पचार से अरेंज देम फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट कौन पचार अरेंज देम फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट कहा को इंडो गैंगेटिक प्लेन रीजन को ओके देखी दवा टिके
ओके ए पार्ट को देखिबा नॉर्दर्न प्लेन्स ओके पंजाब प्लेन्स गंगा प्लेन्स राजस्थान प्लेन्स और आसाम प्लेन्स से कौन पचारछि वेस्ट टू ईस्ट पचारछि तो आमे गोटे जिंस मन रखबा जे आसाम प्लेन्स तो ऑलरेडी ईस्ट रे आसी सारला ओके फॉर्म्ड बाय द ब्रह्मपुत्र रिवर बुझिपाला फॉर्म्ड बाय ब्रह्मपुत्र रिवर कहीं की लिखा है से इंडो गैंगेटिक प्लेन्स बोली की बिकॉज आसाम प्लेन्स और द नॉर्थ ईस्टर्न प्लेन्स ओके आर द एक्सटेंशन ऑफ द इंडो गैंगेटिक प्लेन्स से कौन इंडो गैंगेटिक प्लेन्स रो एक्सटेंशन ओके आसाम तो लास्ट रही गला ता माने कोन 3 टा लास्ट रे अछि माने एटा हबनी ओके एई 3 टा भितर किछि उडे हबो पंजाब को देखिबा तो पंजाब कोन अछंती हम जो फार वेस्ट रे कोन अछि पंजाब अछि ओके फार वेस्ट रे कोन अछि एई रीजन टा पंजाब प्लेन्स ओके राजस्थान प्लेन्स एई रीजन रे अछि क्लियर राजस्थान प्लेन्स को किए ट्रेन करे लुनी आउ इंदिरा गांधी कैनाल लुनी रिवर सांबर रीजन ओके पंजाब तो जानिचो लैंड ऑफ 5 रिवर्स ओके इंपोर्टेंट वेटलैंड एटी कोन अछि हारिके वेटलैंड ओके जोटू कोन इंदिरा गांधी कैनाल आसे आउ राजस्थान रीजन को ड्रेन करे ओके गंगा प्लेन्स ए रीजन टा ओके तो आंसर कोन हबो ए बस सौम्यश्री ए बी ग्लोरिया ए सौम्य ए ओके ठीक अछि जदि यार ओरिएंटेशन देखिबा कोन हे गला जदि एई ओरिएंटेशन हिसाब रे देखिबा तो कोन हे जिवो 3 तो अच्छा आसाम प्लेन्स तो 3 तो एपट रही गला ओके फर्स्ट कोन आसी जिवो ए देखो 4 रे राजस्थान प्लेन्स ओके तापरे आसी जिवो 1 पंजाब प्लेन्स तापरे आसी जिवो गंगा प्लेन्स ओके तापरे सेट रही गला 3 माने 4 1 2 3 माने आंसर कोन हबो यारो 4 1 2 3 क्लियर तो एटा थिला हमर कोन रीजनल क्लासिफिकेशन ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स ओके तापूर्व आमे कोन पढिथिले वर्टिकल क्लासिफिकेशन केमिति फर्टिलिटी चेंज होउची ओके डिपोजिशनल फीचर पढिले बुझि पारलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिया which one of the following best explains why the eastern ghats are lower काहे कि ईस्टर्न घाट्स रो हाइट छोटो आउ से माने डिसकंटीन्यूअस आउ इरोडेड कंपेयर टू द वेस्टर्न घाट रो कंपैरिजन एटा ई क्वेश्चन रो डिस्क्रिप्शन हमें आगरो प्रीवियस क्वेश्चन रे करि सारी तो यार आंसर तो आराम से आसिया कथा फर्स्ट ऑप्शन कोन because of the eastern ghats are geologically older and have been eroded by east flowing rivers b option kono because they were formed by volcanic activity and later submerged under the sea okay c option kono because the western ghats are tectonically uplifted block mountains okay fourth option because the eastern ghats receive less rainfall and hence erode faster okay এই স্টেটমেন্ট তো পুরা ভুল আছে ওকে
अधिक वर्षा हेले ही इरोजन अधिक हबो, लीचिंग अधिक होई परिबो। वेरी गुड, ठीक अछि। ए आंसर कोन यारो? ए। हमें आगरो भी डिस्कस करि थरचे कोन दैट बिकॉज़ द ईस्टर्न घाट्स आर जियोलॉजिकली ओल्डर, माने तारो एज वेस्टर्न घाट्स तो अधिक, आउ कोन हमर जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स होंदी महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ओके ओडिशा रीजन रे कोन छथि जो हेक्सा डेल्टाइक रीजन अछि, ओडिशा रीजन को कहा जाय? हेक्सा डेल्टाइक रीजन। ओके से माने कोन करंती? इरोड करंती कहा को? ईस्टर्न घाट्स को। से माने इरोड करिकि ईस्टर्न घाट्स को कोठी ड्रेन हेबे? बे ऑफ बंगाल रे ड्रेन हेबे। बुझी वाला कथा? क्लियर? फिजियोग्राफिक डिवीजन रा हमें केते गुडे क्वेश्चन कले, तारो टॉपिक वाइज डिस्क्रिप्शन भी देखिले, मैपिंग भी कले, बुझी पालो? तो देखो पिक्टोरियल नॉलेज सब बेले बेसी मने रहे। जे तमे लेंथी नोट लिखिबा को चेष्टा करिवो ताहले से कोन हबो? मने रहिबो नाही। ज्योग्राफी कोन? ज्योग्राफी रे मैपिंग बहुत इंपोर्टेंट। जे तुमको किछि जिंस मने रखियार अछि तो कोन मैप थ्रू ही ताको मने रखि परिबो। यदि बिना मैप रे तमे करिया चेष्टा करिवो कंफ्यूजन हबो, आउ मने रहिबो नाही, शॉर्ट टर्म मेमोरी रे रहिबो। बुझी पालो कथा? लेंथी नोट ता ऑप्शन न, बुझी पालो? जति की हे परिबो केमि करिवो? मैप थ्रू रे ज्योग्राफी पढो, बिना मैप रे ज्योग्राफी पढिबाटा वृथा। बुझी पालो कथा? क्लियर? ठीक अछि। आज पय एति की नेक्स्ट क्लास रे पुणी आमे आज फिजियोग्राफी डिवीजन पढ़िले, वेस्टर्न घाट्स ईस्टर्न घाट्स भी पढ़िले, आउ नेक्स्ट क्लास रे आमे किछिटा वर्ल्ड ज्योग्राफी पार्ट रो किछिटा पढ़िबा, किछिटा क्वेश्चंस करिया को पार्ट रो? वर्ल्ड ज्योग्राफी पार्ट रो। ओके, थैंक यू।